आज डेट है 23 नवंबर 2018, टाइम हुआ सुबह के 7 बजे एंड वी आर ऑन आवर वे टू द ऑकलैंड एयरपोर्ट. So Auckland Airport is around 20 kilometers from here, and at this time in the morning it shouldn't take us more than about half an hour to get there. और ये जो सफ़र 20-25 किलोमीटर के साथ शुरू हुआ है, eventually दिल्ली पहुँचते पहुँचते we would have completed around 17,000 kilometers. यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमें अभी कम से कम 30 घंटे और लगेंगे. तो बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी करा के हम लोग पहुंचे जल्दी ही अपनी फ्लाइट में और फ्लाइट पे हम लोगों को मिला एक पिलो, ब्लैंकेट, आई मास्क, हेडफोन्स और कुछ टॉयलेटरीज. और थोड़ी देर में हम लोग बढ़ चढ़े रनवे की तरफ एंड द प्लेन्स लाइंड अप फॉर टेक ऑफ. And finally the takeoff. वैसे तो मैंने बहुत सारे एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंड किया, लेकिन ऑकलैंड एयरपोर्ट की बात ही कुछ और है, स्पेशली जब दिन इतना सुंदर निकला हुआ. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर ना करूं. Here is the aerial view of the beautiful Auckland. Please enjoy.
तो ये न्यूजीलैंड का वेस्ट कोस्ट है और इसके बाद हम लोग फ्लाई करेंगे टैस्मैन सी के ऊपर से टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। गुड बाय न्यूजीलैंड, सी यू अगेन आफ्टर अ मंथ। और थोड़ी देर बाद हम लोगों को फ्लाइट में सर्व हुई ड्रिंक्स एंड ऑसम लंच। और क्योंकि हमने हिंदू नॉनवेज मील रिक्वेस्ट की थी इसलिए हम लोगों को मिला चिकन एंड सम कैरेट केक और स्वीडिश में सम आइसक्रीम। खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया बट बानी kept herself busy with the camera and thankfully so। तकरीबन 4-4.5 घंटे के बाद हम लोगों को मिला डिनर और डिनर करते करते के साथ ही वी वर रेडी टू लैंड ओवर द ब्यूटीफुल ग्वांगझाओ। ग्वांगझाओ चाइना का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पे हम लोगों का ले हुआ था 2 घंटे का। क्योंकि फ्लाइट चेंज करने से पहले हमारे पास सिर्फ 2 घंटे तो हमने जल्दी से लगाया एयरपोर्ट का चक्कर। एंड सून आफ्टर यू ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ टू दिल्ली। Soon into the flight, we were served our dinner, which was the third meal. और इसके तकरीबन 5 घंटे के बाद we were flying over Delhi, ready to land at the Indira Gandhi International. So this is the view of Delhi from the top at the night. तो रात को 11:30 बजे फाइनली हम लोगों ने लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो अभी तक हम लोगों को ट्रैवल करते हुए तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमारा सफ़र का अंत यहाँ नहीं है, हम लोगों ने अल्मोड़ा जाना है। तो अभी मुझे कम से कम 17 घंटे और ट्रैवल करना है। सुबह 6 बजे मैंने पकड़ी शताब्दी एक्सप्रेस काठगोदाम के लिए।
काठ गोदाम से 300 रुपये में शेयर टैक्सी रानीखेत के लिए और फिर वहाँ से बस द्वाराहाट के लिए। और फाइनली शाम को 7 बजे मैं अंधेरे में द्वाराहाट पहुंचा। आई वाज जस्ट टू टायर्ड टू शूट। आई हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 47 आवर्स। सो आई विल कैच अप विद यू गाइस टुमारो इन द्वाराहाट। आई होप आपको ऑकलैंड से द्वाराहाट का सफर पसंद आया होगा। इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, and thanks you guys for joining us once again.